question number 4 is, if 5 sec theta minus 12 cos sec theta equal to 0, find the values of sec theta, cos theta and sin theta. So let's write what is given to us. Okay. So question number 4 का solution हम करेंगे. It is given 5 sec theta minus 12 cos sec theta equals to 0. और हमें वैल्यूज फाइंड करनी sec, cos और sin की. ठीक है. तो अभी जो हमें गिवन है इससे हम क्या सॉल्व करके निकाल के फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम देखते हैं. ठीक है. अभी यहाँ पर 5 sec थीटा के संग 5 मल्टीप्लाई में है और ये एक आइडेंटिटीज के रूप में दिया हुआ है. तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. 5 sec थीटा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू 0 है ना और ये माइनस में, तो इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे. तो ये लिख सकते हैं. पहले आप मुझे ये बताओ, लिख सकते हैं 5 sec थीटा इक्वल टू 12 cos sec थीटा. अब इसको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप. अभी देखिए अननोन, ये जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज है इनको हम, रेशियोज हैं इनको हम एक तरफ ले आएंगे. तो sec थीटा अपॉन में आ जाएगा cos sec थीटा. ठीक है. और 5 आ जाएगा अपॉन में. ये समझ में आया कैसे आया. ठीक है. टू सॉल्व दिस वी विल डू दिस. अभी sec थीटा को हम क्या करेंगे, sec थीटा को हम और सॉल्व कर सकते हैं. हाँ कर सकते हैं. इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन cos थीटा अपॉन cos sec थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sin थीटा इक्वल्स टू 12 अपॉन 5. लिख सकते हैं. ओके. नाउ टू सॉल्व दिस, ये देखिए 1 अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाई, अभी ये रिवर्स होगा. ठीक है. तो मल्टीप्लाई sin थीटा अपॉन 1. समझ में आ रहा है. तो जब ये हम करेंगे इक्वल टू 12 अपॉन 5, तो अभी ये 1 कैंसिल हो जाएंगे. अब मल्टीप्लाई कर लीजिए या तो sin थीटा अपॉन cos थीटा हमें यहां से मिलेगा 12 अपॉन 5. यस. sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा. 12 अपॉन 5. तो ये तो हमने सॉल्व किया जो हमें गिवन था. हमें ये स्टेटमेंट गिवन था, इससे हमने सॉल्व किया और हमें मिला tan थीटा 12 अपॉन 5. तो ये हमारी एक वैल्यू गिवन निकल कर आई कि tan थीटा 12 अपॉन 5 है. ठीक है. अब tan थीटा वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. यस. तो यहाँ 12 अपॉन 5. देखिए दो साइड्स हमें गिवन है और थर्ड साइड हमें कैलकुलेट करनी है. तो हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. सो टू अंडरस्टैंड दैट लेट्स ड्रॉ अ फिगर, a right angle triangle that is ABC. Okay. This is our 90 degree. This is theta. Now, opposite side is with respect to theta BC. It is given 12 and adjacent side is AB with respect to theta. It is given 5. Okay. This much you know. अभी हमें third find out करना है. So, in triangle ABC using Pythagoras theorem, we will write AC square is equals to side 1 square plus side 2 square. Okay. Abhi, because tan theta is 12 upon 5, so this is a ratio, na? So when we are writing a ratio, the values are depending to each other, right? So if there is ratio x upon y, so when x changes, y also changes. It is equal to a constant k. So here we are writing 5k and here we are writing 12k. Tan theta is given 12 upon 5, right? So that means, what is the formula of tan theta? That is opposite side upon adjacent side. Here opposite side with respect to theta is BC upon adjacent side is AB. Therefore BC हमारी कितनी given है, that is 12k and AB is given 5k. We need to calculate AC. So we will put the values here in Pythagoras theorem. AC square is equals to 12k square plus AB is 5k square. So after solving this, we will get AC square is equals to, this is 144k square plus this is 25k square. Okay. So we are getting is 169k square, isn't it? ये ऐड हो जाएगा तो यहां से हमें मिलेगा AC square root of 169k square, that is 13k. So we got AC 13k. In the question, sec theta, cos theta, sin theta. Now we will calculate. So what is sec theta?
sec theta is opposite of cos theta. So first cos theta लिख लेते हैं. Cos theta is what? Adjacent side upon hypotenuse. Adjacent side is AB. Hypotenuse is AC. Okay. तो cos theta में यहां से मिलेगा AB is what? 5K and AC is what? 13K. So this will cancel each other. Cos theta is 5 upon 13. Okay. Now next is sec theta, which is the inverse of cos theta. So it is directly 13 upon 5. Okay. Then sin theta you have to find. Sin theta is equals to, what is the formula? Opposite side, that is BC upon hypotenuse, that is AC. So BC is 12K and AC is 13K. So this will cancel. Sin theta we will get 12 upon 13. Okay. So in this way we can calculate sin theta, cos theta and sec theta. Understood? Okay. Question number 5 is, if tan theta is equals to then find the value of this. So we will solve this. How we can solve this? First we will write the given. What is given? Tan theta is equals to 1. Okay. So अगर आपको tan एक रेशियो दिया हुआ है तो दैट मीन्स आपको दो साइड्स तो पता है ना. ये हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो 1 upon 1 लिख लेंगे. वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर tan theta, that is tan ratio, is opposite side upon adjacent side. Okay. So we will draw a right angle triangle first. This is our A, this is B, this is C. Okay. अभी tan theta is 1 upon 1, so that means opposite side is this. Suppose this is angle theta, this is 90 degree. So it is given 1K, or you can say K, and it is also AC is not given. Adjacent side is given, that is 1K. Okay. And we need to calculate AC as same we did in question number 4, right? So we will find out AC in triangle ABC using Pythagoras theorem. What it says, AC square is equals to BC square plus AB square. तो AC वैल्यूज रख देंगे 1K स्क्वायर प्लस 1K स्क्वायर. So that is K square plus K square is equals to 2K square. So AC we will get 2K square. Square root find out करेंगे root 2K. Okay. This much understood. Now we have to calculate the values of other ratios which is given in the question, that is sin, cos, sec, cosec. Okay. So we will do one by one. Sin theta is what? Opposite side upon hypotenuse. Yes. BC upon AC. BC is given K or AC is given, we have calculated root 2K. So here it is 1 upon root 2. Sin theta, then what we know, we have cos theta we need to calculate. Cos theta is AB upon AC. AB is what? That is K again. AC is root 2K. So this will cancel out. We get 1 upon root 2. This much understood? Now next we have to find sec theta. We know that sec theta is 1 upon cos theta. So it is equal to root 2 upon 1. Next is cosec theta. Cosec theta is what? That is 1 upon sin theta. So it is also equal to root 2 upon 1. ठीक है. अभी in this question sin, cos, sec, cosec values मिल गई. Now we will put the values to find the value, final value. Okay. So what is given here? Given sin theta plus cos theta upon sec theta plus cosec theta. Put the values. Sin theta is 1 upon root 2 plus cos theta is 1 upon root 2 upon sec theta is root 2. Cosec theta is root 2. So it is equal to 1 upon, this is 2 upon root 2 and it is equals to 2 root 2. So we will solve this.
2 upon root 2 multiply, and now this will reverse. So 1 upon 2 root 2. This understood? So 2 will cancel out and root 2 becomes equal to 2. So answer is 1 upon 2. This is your final answer.